Okay, so we have come around 20 kilometers from Kaza. Actually, my GoPro battery was drained, so I was charging on the way while from my tank bag. From my power bank. So now we are leaving to Losar. Losar is just 35 kilometers from I am right now. 20 kilometers away from Kaza and 35 kilometers to Losar. And look at those beautiful roads. I won't be able to record much because my 64 GB card got full, is occupied. I misplaced my 64 GB memory card when leaving today, and we searched it for like 30 minutes or 45 minutes, and after then one of the hotel guy found it and he gave it to us. God, I was so scared because it had everything from Delhi to Spiti, I mean Kaza. So it was, you don't know what it means to me, man. You cannot imagine. My fellow riders are ahead of me. I just mounted my GoPro camera and look at this view. Amazing, no? Gosh. Shit. Over your skin you can see it beat, intoxicating your energy. First time in so long you felt the heat, evaporating your bindings. Move like the sunlight, darkness can't hold you here. Bold and bright, push through the atmosphere. This is your dawn, this is your break. Move like the sunlight. Crossed 50 kilometers from Kaza, and we are going to reach Losar in like a few minutes, around 6 or 5 kilometers. And look at this view. Losar, straight. Okay, so actually in between we found two diversions, so it was important to ask if this is the route to Losar or no. And the road is totally gone. Like we have come in here in the speed of 20 kilometers per hour average speed, but you just keep on watching the views. As much I can show you. Oh yaar, wow, great. And also my 32 GB which is inside this GoPro, which I took out from my drone camera. I have only 30, it is of 32 GB, and I don't think it will be working till Manali, so I won't be able to vlog much. Blind
आर डूइंग गुड एंड आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा वेयर आई टोटली बिकेम ब्लैंक एज व्हाट टू डू नाउ एंड दिस इज़ बेसिकली अ वॉइस ओवर टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो स्टार्टिंग फ्रॉम काजा हम सुबह वहाँ से अराउंड 11 o'clock निकले क्योंकि हमारा प्लान ये था कि विल राइड टिल लोसार विच इज़ अराउंड 50 to 60 kilometers एंड विल स्टे देयर फॉर द नाइट। और हम वहाँ पहुँच कर लंच ले ही रहे थे एंड इवन वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ रूम टू स्टे इन। बाय द टाइम इट वॉज 3 PM इन द आफ्टरनून एंड सडनली समवन सेड लेट्स मूव अहेड टिल बाटल so that we can get to explore Chandratal as well the next day. Basically Chandratal is very near to Batal, so earlier our plan was to skip Chandratal because we were already running short of time. After an hour of discussion we started our journey till Batal and guess जैसे ही Batal पहुँचे हमें पता चला there is no available network in anyone's phone, whether it be Airtel, BSNL, Vodafone Idea. We reached Batal crossing Kunjum Pass in the evening around 6 PM and then realized that if I won't make a call at my home I am dead. Because throughout my trip I made a habit of making a call at home wherever I reached by evening. But now when I realized that for the next 24 hours I won't be able to make a call or message, I kept on getting goosebumps. मन में इतने सारे ख्याल आ रहे थे कि यार शिट अब क्या होगा, कैसे कांटेक्ट करूँ। बतल में जो चाचा चाची ढाबा है बहुत फेमस ढाबा है, वहाँ भी मैंने ट्राई किया कि कैसे भी कांटेक्ट हो जाए बट कोई सैटेलाइट फ़ोन अवेलेबल नहीं था वहाँ पे। और ऑन द अदर साइड अखिल, विनय एंड सूर्या वर trying to make me calm, saying everything will be all right and I really appreciate that gesture towards me जबकि हम सिर्फ कुछ ही दिन के फ्रेंड्स थे but undoubtedly the bonding we share till today is amazing. सो कमिंग बैक टू द वीडियो, रात को हम जब डिनर ले रहे थे अराउंड 9:30 आई सॉ एक इनोवा में फैमिली लोसर की तरफ जा रही थी। तो मैंने उन्हें रोक कर रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ मेरे फैमिली को इन्फॉर्म कर देना कि आई एम सेफ़ एंड विल कॉन्टैक्ट यू द नेक्स्ट इवनिंग। मैं रात को यही सोच रहा था कि क्या वो लोग मेरी फैमिली को इन्फॉर्म करेंगे या नहीं। एंड डैम, द नेक्स्ट डे व्हेन आई रीच द नेटवर्क एरिया हैड अ टॉक विद डैड एंड आई गॉट टू नो दैट दे कॉल्ड अप एंड मैंने ज़ोर से थैंक यू चिल्लाया। रात को हम जब बतल में सो रहे थे तो टेम्परेचर ड्रॉप टू -8 एंड आई वॉज शिवरिंग लाइक एनीथिंग बट डिडंट हैव अ स्लीपिंग बैग बट समहाउ आई सर्वाइव द नाइट। हर 2 घंटे में उठता था और सोता था और द नेक्स्ट डे मॉर्निंग वी वर ऑल प्रिपेयर्ड टू लीव फॉर चंद्रताल लेक but then Surya wasn't feeling well and Akhil didn't want to take his bike along, so I asked him to be my pillion but at first I was scared क्योंकि रोड कंडीशंस बहुत ख़राब थी और ऐसे में किसी भी तरीके का मिसहैप होने का पूरे चांसेस थे। बट एनीवे मैं और अखिल एक ही बाइक पे निकल गए और विनय अपनी बाइक पे विद एन एटीट्यूड ऑफ जो होगा देखा जाएगा। So there's another water crossing now. Oh shit. Yes. See, what you do is you go there. Again I have to step in the water only. Yeah, you. How will you go? I just have to step here and there. Then I can Keep accelerating, man. keep accelerating. Walk with the bike. Walk. Walk with the bike. Better if you go. Walk with the bike. Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion. So I'm wet already because Vinay's bike did not make it. Final gates to open to a new tomorrow.
journey from Batal to Gramfu, and the roads are extremely bad. Whoever we asked, who was coming from Manali, about the road conditions, and they said you will have the worst nightmare in your life. The roads are so bad, and literally the view is too good, and the roads are too bad. I'm riding at around speed of 15 kilometers per hour, not even 15. And today we are gonna stay in Gramfu or either Koksar, and tomorrow most probably not. We'll be leaving for Manali, and I'll keep shooting videos, but not too much because I don't have much space left in my GoPro memory card. Oh god. So the Chandratal patch was good, and it is equal to Chandratal patch. Oh, basically look at the roads. Oh. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my badness. Not goodness. Oh shit. Oh. Is he coming? Let me see. Two of the fellow riders are riding ahead, and one is behind me now. Oh god. Oh my goodness, look at the view. What happened? Is he coming or no? Look at it. Look at that mountain, man. I don't know how it's gonna go. Oh shit. Our expected time of arrival at Koksar or Grampu is around 5 PM or 6 PM by evening. And the baddest patch, the worst part is from or the whole trip is from Batal to Gramfu. Yesterday night also I couldn't sleep properly because I didn't have a sleeping bag. Rest three of them had it, and what I did was I wore some guy's jacket, and in uske upar I wore my another jacket, and then I got to sleep. I was shivering actually, to be very frank. And the temperature was around -5 or -6 for sure. The views are amazing, but the roads are extremely bad. Oh god, can't believe this. ओके सो इट्स टाइम टू एंड द वीडियो. इसके बाद का मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया ड्यू टू इनसफिशिएंट स्पेस इन माय मेमोरी कार्ड, बट रास्ते ख़राब होते जा रहे थे और व्यूज़ ब्यूटीफुल होते जा रहे थे. एनीवे स्पीति के सारे पार्ट्स ख़त्म हो चुके हैं एंड आई होप आपको सब पसंद आए होंगे. और अब न्यू वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि एट प्रेजेंट आई हैवंट प्लान्ड फॉर एनी लॉन्ग राइड ड्यू टू कोरोना वायरस सिचुएशन. येस आई नो देर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव स्टार्टेड ट्रैवलिंग, बट मुझे अभी भी थोड़ा सेफ नहीं लगता है. आई मीन वन डे ट्रैवलिंग इज़ ओके. जैसे मैं लास्ट संडे मैं और रिचा सापुतारा गए
गए थे एंड इट वाज फन, और उसका वीडियो भी जल्दी आएगा. टिल दैट टाइम कीप योर सेल्फ सेफ, राइड हार्ड, राइड सेफ, बाय बाय.